हेलो एवरीवन। अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube पे देखा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यू हैव सीन द वे आई डिस्कस, द वे आई लिंक इट विद 360 डिग्री एनालिसिस। जिस तरीके से हम डेप्थ में एनालाइज करते हैं, क्यों करते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे आर एक्चुअली रिसोर्स माइंड। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि यूपीएससी का माइंडसेट क्या है, how the nature of question, the depth of the analysis, the depth of the concepts are changing. पहले यूपीएससी बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा करता था बुद्धिज्म जैनिज्म में। However, that is a very favorite area, favorite topic for UPSC prelims. But same Buddhism, Jainism is still being asked, but the nature of questions, the depth of the question has changed. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखते हैं, आप ये एनालिसिस करते हैं। अर्लियर देयर वाज कुछ सालों के लिए था कि मिडविल इंडिया नहीं पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, लेकिन अभी मिडविल इंडिया पे ज्यादा फोकस है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे गिव अ स्नीक पीक इनटू यूपीएससी's माइंडसेट, दैट दे आर थिंकिंग ऑन व्हाट लाइंस, व्हाट काइंड ऑफ डेप्थ दे आर डिमांडिंग फ्रॉम एन एस्पिरेंट, दैट हमारी प्रिपरेशन उन लाइंस पे होनी चाहिए। इवन इन करंट अफेयर्स बेसिक्स कभी पूछे जाते थे, बट अब करंट अफेयर्स का स्टैटिक से लिंकेज किया जाता है, डेप्थ में गए हैं वो लोग। इवन रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इफ यू एनालाइज, अर्लियर दे यूज्ड टू आस्क हु रिलीजेस इट, बट नाउ दे आर आस्किंग ऑन द पैरामीटर्स। सो द आइडिया इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे हेल्प अस टू नॉट ओनली एनालाइज यूपीएससी's माइंडसेट, बट इट ऑल्सो हेल्प्स अस कि हमारे जो टूल्स होने चाहिए, हमारे जो अस्त्र और शस्त्र होने चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए कैसे रेडी होना है, how we should align our preparation, how we should revise, how we should take maximum benefit of the static books, the current affairs, या जो सोचने का तरीका वो कैसे बदलेगा। And precisely we are doing this from last 2 years. Previous year questions को हम डिस्कस करते हैं। Previous year question series, PYQ series, Revised to Ace is very popular series on our YouTube, and that has rewarded us very well in the past, and to our aspirants who have been following it. So keeping those things in mind, keeping the importance of PYQ, keeping our hold on PYQ, our depth analysis on PYQ, we are launching this PYQ based prelims test series. इस PYQ based prelims test series के बारे में डिस्कस करने से पहले we will discuss what is the problem in the conventional test series. जो conventional test series होती हैं, they are not based on UPSC's latest pattern. When I say they are not based on UPSC's latest pattern, be it with respect to the type or weightage. UPSC, let's say for example, if you will analyze the 2023 and 2022 paper, you will realize that modern history कम है, ancient और medieval ज़्यादा है. So the weightage has shifted. Even in polity, the core concepts and peripheral areas, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में भी पेरिफेरल एरिया से आ रहा है। सो द क्वेश्चन नेचर हैज शिफ्टेड, वेटेज हैज शिफ्टेड, टाइप, इवन द वे दे फ्रेम द क्वेश्चन वो भी शिफ्ट हो रहा है। सो द कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज जब भी हम ज्वाइन करते हैं, सेम टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 सेक्शनल, वहां बेसिक से पूछा जाता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, एक सूडो कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी आर एबल टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, 120, 130 आ रहे हैं, वहां तो और अच्छा आना चाहिए। बट इफ यू आर नॉट टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट पैटर्न, there is no use. Second problem is the problem of lack of depth. जो नेचर है अभी यूपीएससी के क्वेश्चंस पूछने का, that is shifting from basic to advanced. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया जैनिज्म में, बुद्धिज्म जैनिज्म में पहले बेसिक हुआ करता था और रिपोर्ट्स बेसिक they used to ask, but now they are going in depth, they are doing the in depth analysis, so the advanced nature. एक ये प्रॉब्लम है कि हमें ऐसी टेस्ट सीरीज नहीं मिल पाती है जिससे हम वो डेप्थ और एनालिसिस कर पाए। द थर्ड प्रॉब्लम इज द वे वी प्रिपेयर करंट अफेयर्स सेपरेटली, और इवन इन द टेस्ट सीरीज दे मेक यू इंट्रोड्यूस द करंट अफेयर्स टू यू इन अ separate question on current affairs, but they are lacking. There is a poor current affairs linkage with the static. Direct is being asked but not the static. If you will analyze the previous 2023 paper, there were 30 plus questions which were directly asked by UPSC from current affairs, but there were n number of questions with current context, static questions with current context. ऐसे UPSC नहीं पूछता है।
There must be some current context, that's why they are asking it. And last year, if you'll go and analyze, see our video, most of you must be knowing that we run the current affairs classes as well for prelims and mains. तो हमारे current affairs classes से काफी कुछ आया था. So you will get to know. So in order to address these problems, we should also have certain solution. The solution lies in understanding the UPSC's latest trend. Latest trend हमें कहाँ से मिलेगा? Previous year questions को देखने से मिलेगा. We need to do the reverse engineering. When we sit with the previous year questions, we do the reverse engineering. हम UPSC के shoes में enter करके UPSC के mindset को समझते हैं. Third is depth is needed. Static and current affairs का linkage चाहिए. Static को static की तरह नहीं देखना है. Static को ये देखना है कि क्या उससे related कोई current affairs आज की डेट में है. अगर है तो क्या linkage है. What kind of questions can be asked. So that kind of depth is required. So the solution lies here. So in order to solve those problems and provide you these solutions, we are launching this PYQ based prelims test series. So the features of the PYQ based prelims test series are, it is based on the latest UPSC trend. जो latest UPSC trend की जब हम बात करते हैं तो latest UPSC trend क्या है? The way they are framing the question, the depth of the question, the type of the question, the weightage of the subjects. Right? So everything, whatever is UPSC's latest trend in terms of framing the question, in terms of the subjects, depth, concepts, current affair linkage, it is based on that trend. Second is, it is based on PYQs. So here we are not taking the PYQs and putting it in the test series and asking questions. कई बच्चों ने ये भी बोला कि सर क्या यहाँ पे आप PYQs कंपाइल करके टेस्ट सीरीज दे दोगे? अगर ऐसे ही देना होता तो फिर PYQs आर गुड फॉर यू. यहाँ पे PYQs को लेते हैं, उसको एंकर करते हैं, उसके अराउंड जो भी 360 डिग्री एनालिसिस हो सकती है, उससे रिलेटेड उस तरीके से और क्या आ सकता है. यूपीएससी ने अगर कोई चीज 2022 में पूछी है, उसी क्वेश्चन को अगर आज पूछा जाए तो उस तरीके से इट इज बेस्ड ऑन PYQs. इट इज बेस्ड ऑन PYQ इन द सेंस दैट इट इज द क्वेश्चंस विल बी इंस्पायर्ड फ्रॉम द PYQs. द एडवांस नेचर. अभी हम इस टेस्ट सीरीज में आपको बेसिक क्वेश्चंस ऐसे नहीं मिलेंगे कि कितने सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म जैनिज्म में, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन कि अगर बुद्धिज्म जैनिज्म में कोई सेक्ट है तो उसके सबसेक्ट्स क्या हैं, उसकी फिलॉसफी क्या है. यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन दैट. सो इंस्पायर्ड बाय PYQs, द क्वेश्चंस विल बी फ्रेम्ड ऑन दैट लेवल, दैट डिफिकल्टी लेवल. 5000 questions will be there. So there are 50 tests in this. The nature of questions will be intermediate to advanced level. There will be no basic question. आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए आप बुक्स डेफिनेटली रीड कीजिए, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम रेडी होने के लिए क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है. सो द नेचर ऑफ द क्वेश्चन विल बी इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल. करंट अफेयर एक्सक्लूसिव टेस्ट विल बी देयर. सो सेपरेट करंट अफेयर एक्सक्लूसिव टेस्ट भी इसमें हमने इंक्लूड किया है. सो हाउ वी हैव डिवाइडेड इट. सो देयर आर सेक्शनल टेस्ट, 33 सेक्शनल टेस्ट. And in every sectional test, let's say ancient history ka, the first test is of ancient history. So 70 question will be of ancient history and 30 questions will be of current affairs. So in all the 50 tests, there will be 70 questions subject के होंगे और 30 questions आपके current affairs के होंगे. So this is 70:30 rule. Full length test, there are 13 full length tests. जब sectional और full length की बात करते हो तो sectional हो गया, subject wise full length हो गया, all subjects will be mixed based on the latest pattern. And there also 13 tests are there and 70:30 rule. 70 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, 30 आपके करंट अफेयर्स के होंगे. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव करंट अफेयर एक्सक्लूसिव 4 टेस्ट. सो देयर आर 4 टेस्ट विच वी हैव केप्ट करंट अफेयर एक्सक्लूसिव ओनली फॉर करंट अफेयर्स. सो क्वेश्चंस अभी आप देखो हर टेस्ट में 30 सॉल्व कर रहे हो और 4 आपने, तो 46 टेस्ट में तो आप 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के सॉल्व कर ही रहे हो. 4 टेस्ट एक्सक्लूसिवली 400 अलग से आपको मिलेंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव डिवाइडेड दी sectional aspects and the full length aspects. Now why PYQ based test series? Why we should join or why we should think about it? Why we thought about PYQ based test series? We thought about PYQ based test series because through this you will be able to hit sharply, be it in your revision, be it in the UPSC exam, prelims, upcoming exam. You will be able to hit sharply. Whatever is being asked, you are preparing on those lines and you are hitting it sharply. So this is called as hitting the bull's eye. जैसे अर्जुन ने किया था.
अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मार दिया था। वो कॉन्फिडेंस कब आता है? प्रैक्टिस से आता है, लेकिन प्रैक्टिस सही लाइंस पे होनी चाहिए। सो यू विल बी एबल टू हिट शार्पली, यू विल बी रेडी फॉर ऑल द सरप्राइजेस। जब हम कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज करते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बस बूस्ट करते रहते हैं, अरे ये बेसिक है, पढ़ा है, पॉलिटी में पढ़ा है, अरे करंट अफेयर्स में डायरेक्टली हाँ हमने पढ़ा है, एंड यस दिस वाज गिवन इन माय बुक, oh yes this they have taught in my class. So if you are preparing on those lines, you will not be ready for the surprises. So through PYQ based test series you will be able to handle those surprises, because the nature of the question will be intermediate to advanced level. From the very first test you are preparing from intermediate to advanced level. Basics definitely it will be taken care of. Third, you need to take the lead from the front. अभी क्या होता है, आपको ये भी लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मार्केट में हैं ही, वेबसाइट पे यूपीएससी के, उसको डाउनलोड करो, उसको सॉल्व कर लो एंड वी आर रेडी। सिर्फ उसको सॉल्व करने से अगर हम रेडी हो जाते हैं, देन हाउ वी विल अंडरस्टैंड यूपीएससी's माइंडसेट। सी व्हेन यू आर एन एस्पिरेंट, जब हम भी एस्पिरेंट थे, हमें भी लगता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, सॉल्व कर लो, सब कुछ हो जाएगा और उसका रिविजन हो जाएगा। बट द चांसेस आर लेस दैट यूपीएससी इज गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चंस अगेन। बट यस, थीम, डेप्थ, क्वालिटी, बेसिक टू एडवांस नेचर, ये सब की एनालिसिस जब करेंगे और सिमिलर लाइंस पे प्रिपेयर करेंगे, देन वी विल बी एबल टू टेक द लीड फ्रॉम द फ्रंट। सो यू कैन ऑल्सो डू इट, बट उतना टाइम होना चाहिए, उतना सोचने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। सो हियर व्हाट वी आर डूइंग दैट जॉब फॉर यू। वी आर एनालाइजिंग, वी आर फ्रेमिंग न्यू क्वेश्चंस फॉर यू ऑन द सिमिलर लाइन, पैरेलल लाइंस, डेप्थ, और क्या हो सकता है। हम अपना एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, हमारी नॉलेज यूज कर रहे हैं और पीवाईक्यूज को ले रहे हैं और आपके लिए ये क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। सो यू नीड टू आउटसोर्स दिस। आप नहीं कर सकते हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है। सो यू नीड टू टेक द लीड फ्रॉम द फ्रंट बाय ज्वाइनिंग दिस और बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज। व्हाई? Because when you do it on your own, you do it passively and you won't be able to give dedicated time for each and every questions in that depth. ठीक है? So that's why PYQ based test series. Now if we have to talk about why we believe in this strategy, especially if I talk about myself, we talk about Elite Academy, why do we believe in this strategy? We have specific reasons to believe. So in 2022, as I told you that we launched our PYQ based revise to ace program on YouTube. So we did only 36 videos. Out of that, 8 questions came directly into the UPSC Prelims 2022 में। हमने बस 36 ही क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसमें से 8 क्वेश्चंस आए। In 2023 we were running our current affairs program for prelims and mains. You will go and analyze on the YouTube itself. You will find a video where we have discussed with proof 30 plus questions came from our classroom, be it static, be it current affairs, because in current affairs program also we do it in very unique manner. We discuss it in question answer format, we link it with the PYQ, we link it with the static. तो जो questions आए थे prelims 2023 में 30 plus questions came from our class, static का, current affairs का, सबका मिला के, because static कहने को होता है, current affairs context होता है। So based on our performance, based on our hold, we have this full confidence, we have trust, we have confidence, and our students have that trust on us कि definitely in 2024 with the help of this PYQ based test series, whatever we are doing on YouTube and the current affairs program, definitely it is there, but this will be a game changer. The PYQ based test series is going to change the whole game in the arena of UPSC preparation, because you will be very close the way UPSC is thinking. You will be very close to it. So we are sure, we are 100% sure कि 2024 में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और here it's not about कि हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस आने वाले हैं या ऐसा कुछ, but the idea is you will be prepared, you will be ready. So the point is that at least you will have that confidence कि जो preparation हो रही है वो सही direction में हो रही है, and definitely the number of questions which will come from the test series or the current affairs or the YouTube videos whatever we are running, that is bonus कि ठीक है, हाँ हमने पढ़ा और वहाँ से चीज़ें आई, लेकिन जो purpose है एग्जाम को क्वालिफाई करना वो मीट करना ज़रूरी है। So that if that purpose is getting fulfilled, nothing like it. So we believe in this strategy because the PYQs are their resource mine.
रिसोर्स माइन है, वो माइंस हैं, उसमें से आपको वो एक आपको उसमें से माइन करके निकालना है इंफॉर्मेशन को. You will understand by entering into UPSC issues. It will boost your confidence the way it has boosted our confidence. Active learning over passive revision. So when we take the PYQs or when we take our subjects or our conventional test series, we do passive revision. हाँ ये पढ़ लिया बुद्धिज्म जैनिज्म में इतने सेट थे, ये गया थे, वहाँ थे, दिगंबर श्वेतांबर. We do passive revision. Current affairs for that matter. Whatever is there in current affairs, we do passive revision. हाँ मैगजीन से पढ़ लिया, compilation से पढ़ लिया. But we don't involve ourselves in active learning. Active learning मतलब उसको देखना, डेप्थ में जाना, एनालाइज करना, उसके लाइंस पे खुद को प्रिपेयर करना, that is called active learning. From the very first test, exam orientation will be there. If you'll see my videos on YouTube, the PYQ based discussion which we do, exam orientation. In every video, the focus is on exam orientation. Similarly, from the very first day, first test itself, exam orientation will be there. We are not making you or we are not bluffing you with कि नहीं ठीक है, हाँ confidence आ जाए, number आ जाए. अगर इस test series में आपके number बहुत कम आ रहे हैं ना, it is good for you. It is good in the sense that you are learning. There is a lot of scope to learn. So don't focus. If you will join, don't focus on marks. Your focus should be on learning. You will be able to beat your anxiety through preparation. Generally हम एग्जाम में जब जाते हैं तो हमें बहुत सारा एंग्जाइटी होता है, कैसा आ गया, पेपर आ गया, बाउंसर आ गया. But if you are preparing, if you are getting yourself ready from the very first day, still we have 6 months in our hand. If you are preparing yourself from the very first day on similar lines the way UPSC is asking, then you will be able to beat your anxiety in the examination hall. Right? So we believe in this because of these points and because of our past experiences. Okay. Now, who should join? This is a question which has been asked by multiple students, many students. So freshers, yes, if you have started your preparation, then you might be thinking कि सर हमें पहले basic कर लेना चाहिए. Basic तो कर लो, लेकिन basic UPSC पूछ नहीं रहा है. So why don't you prepare yourself from the very first day the way UPSC is asking, exam orientation, right? So you should do it because then targeted learning will be there. Then you will not struggle with अच्छा पढ़ तो लिया लेकिन आया कुछ नहीं. Experienced people, the people who have already given this exam multiple times, you will be able to refine your learning because then you will not conventionally revise what you have done in all your attempts. So you will be able to refine your learning. And for working professionals, you will be able to maximize your productivity. You are working, you will steal your time. जहाँ भी है, अगर जो टाइम बचा के आप पढ़ाई कर रहे हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ेगी बिकॉज देन यू आर वर्किंग इन टारगेटेड मैनर. यू आर वर्किंग द वे in the direction the way UPSC is asking the question. So you will be able to maximize your productivity. Now, future roadmap. Through this test series, what is the future roadmap? Through this test series, December to March, the focus is on the sectional. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन चेक द टाइम टेबल. लाइक वी आर ऑन द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेस्ट वी आर फोकसिंग ऑन एंशिएंट. तो एंशिएंट का पहला टेस्ट जो है 1 दिसंबर को ही है. सो देन पॉलिटी इज देयर, देन मॉडर्न हिस्ट्री इज देयर, देन अगेन पॉलिटी इज देयर. सो डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स वी हैव डिवाइडेड दी सेक्शनल टेस्ट. पॉलिटी को ज़्यादा दिया है, 6 टेस्ट हैं, है ना. तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा. सो दिसंबर टू मार्च द फोकस द 33 टेस्ट विल बी ऑन सेक्शनल aspects of the different subjects. April we are focusing on full length test. जितने भी FLTs हैं उस पे फोकस है. And coming to May the focus is on revision. ठीक है, रिविजन यहाँ पे आप टेस्ट के थ्रू भी करोगे और रिविजन एक यूनिक एस्पेक्ट हम लेके आएंगे टेस्ट सीरीज में. We will make you revise the things. So we will conduct revision classes where we will ask you to revise the respective test papers and you come, we will ask the question. So it will be active class, revision classes will be there. So last year we did this in our current affairs classes and it was very rewarding. आप एक हफ्ते में सब कुछ रिवाइज कर लेते हो. So if let's say if 50 tests are there from the very first week of May, we will ask you to revise first 2 test paper, 200 questions, we will ask from anywhere. So that way you will be ready and you will be ready to reply in the class. तो ये जो भी क्लोज ग्रुप रहता है उसी के साथ हम ये डिस्कशन करते हैं, ये रिविजन क्लासेस करते हैं. सो वी फोकस ऑन रिविजन. ये 50 टेस्ट तो सॉल्व कर लिया, लेकिन 50 टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपका रिविजन दिमाग में है कि नहीं, आपके दिमाग में पॉइंट्स कितने हैं. तो रिविजन इज मस्ट
एंड आई एम वेरी श्योर आप लोगों को भी पता होगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज वो कन्वेंशनल हो या मार्केट में कोई भी टेस्ट सीरीज हो, कहीं भी रिवीजन नहीं होता है. सो वी आर फोकसिंग ऑन रिवीजन. रिवीजन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, साल भर पढ़ तो लिया लेकिन उसका रिवीजन अगर सही तरीके से नहीं किया तो एग्जाम में करेंगे क्या. सो वी विल गिव गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू रिवीजन इन द मंथ ऑफ मे. स्लो ग्रेजुअल हम करेंगे ताकि आप भी कंसोलिडेट कर पाओ. And since we are launching it for the first time, so here we have some inaugural offers. Let's discuss about it. So inaugural offer में ये है कि आपको स्पेशल टॉपर सेशन हम कंडक्ट करेंगे where you will learn the hacks, that is practical tips to crack the exam. Not only prelims, especially इस केस में prelims के ही बारे में, but आगे आप टच में रहोगे तो मेन से रिलेटेड भी आपको ये हैक्स मिलते रहेंगे, ऐसे सेशंस रहेंगे. बट हियर you will learn the hacks, practical tips to crack the prelims exam. Special revision classes, as I have already told you, no test series in the market is conducting, no institute is conducting revision classes of the test series. So we are conducting special revision classes so that you will be able to consolidate your learnings closer to exam. May 28, 26 को अगर एग्जाम है तो आपके May फर्स्ट वीक में होगा, तो आपको दिमाग में ज़्यादा दिन तक बातें रहेंगी. जो आप भूल रहे हो आपको टाइम मिलेगा, फिर से रिवाइज कर लेना. एंड वी आर गिविंग अर्ली बर्ड इनॉग्रल ऑफर डिस्काउंट, दैट इज स्पेशल 30% discount we are offering to all those people who are going to join this our inaugural PYQ based prelims test series, right? So the details, the validity of this offer, the details, everything you will get in the description box. Please check, and accordingly you are most welcome. We'll see you in this test series. Okay, I hope there are no doubts. If there are no doubts, then thank you. And if there is any doubt, you can always reach out to us. All the details, the links to join, the code, how to avail this a special inaugural offer of 30% discount, और जो भी features हैं, timetable हैं, you will get it in the description box. Feel free to approach us if there is any doubt. See you. Bye bye. Take care.